Dear students, I am Naseem Miss. Today we are going to learn English Standard 10, Lesson 2.6, World Heritage. Now, these are some World Heritage Sites. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to have significant cultural or natural importance to humanity. As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally. They vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings, and cities. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का मतलब है ऐसी जगह जो इंसानियत के लिए कल्चरल या नेचुरल अहमियत रखती हो। ऐसी जगह का तयन यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करती है। ऐसी जगहों की हिफाजत और देखभाल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मुख्तलिफ होते हैं, जैसे इनमें जंगलात, लेक्स, यादगारें, बिल्डिंग्स और शहरों को भी शामिल किया जाता है। World Heritage Sites can also be a combination of both cultural and natural areas. For example, Mount Hangshan in China is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कल्चरल और नेचुरल दोनों लिहाज से अहमियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर चाइना का माउंट हांगशान इंसानी तहजीब के लिए अहमियत रखने वाली जगह है, क्योंकि इसमें चाइनीज़ आर्ट और हिस्ट्री शामिल है। ये पहाड़ फिज़िकल लैंडस्केप की वजह से भी जाना जाता है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground. The project cost an estimated $80 million, $40 million of which came from 50 different countries. Because of the project's success, UNESCO and the International Council of Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. दुनिया भर के हेरिटेज साइट्स की हिफाजत का ख्याल 20वीं सदी की शुरुआत में आया, मगर इस पर काम 1950 तक शुरू नहीं हो पाया था। 1954 में मिस्र ने दरियाए नील के पानी को जमा करने और उसे कंट्रोल करने के लिए उस पर असवान बंद बांधने का प्लान किया। बंद बांधने के प्लान में वो वादी भी पानी में डूबती थी, जिसमें अबू सिम्बल के मंदिर और पुराने मिस्री आर्ट के नमूने थे। मंदिरों और उस आर्ट के नमूनों की हिफाजत के लिए यूनेस्को ने 1959 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया।
जिसके मुताबिक मंदिरों के बड़े बड़े टुकड़े निकालकर उन्हें ऊंचे मकाम पर दोबारा जोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च हुआ, जिसमें से 40 मिलियन डॉलर दुनिया के 50 दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से जमा हुए। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने हेरिटेज साइट्स की हिफाजत के लिए इंटरनेशनल अदारा कायम करने का प्लान किया। Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites. Finally, in 1968, the International Union of Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. Following the presentation of these goals, the Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. उसके कुछ ही अरसे बाद 1965 में अमेरिका में एक वाइट हाउस कॉन्फ्रेंस ने वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट कायम करने का प्लान किया, जो हिस्टोरिकल वर्ल्ड हेरिटेज ही नहीं बल्कि नेचुरल ब्यूटी वाली जगहों की भी हिफाजत करे। आखिर 1968 में इंटरनेशनल यूनियन ने ऐसे गोल्स तैयार किए और उन्हें 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के सामने पेश किया। उसे यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ने 16 नवंबर 1972 को मंजूर किया। The World Heritage Committee. Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. The committee meets once a year and consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6 years terms by the World Heritage Center's General Assembly. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage List. ये कमेटी की जिम्मेदारी है कि कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जाए। साल में इस कमेटी की एक मीटिंग होती है। इसमें 21 स्टेट पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। जनरल असेंबली ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन नुमाइंदों को 6 साल के लिए चुनती है। इनका काम ये होता है कि अपने इलाकों में नई जगहों के नाम को इस लिस्ट में शामिल करने के लिए पेश करें। अगर आपके जहन में कोई डाउट्स या सवालात हों तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।